हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू कॉग्नि सॉल्वर। सो आई होप कि आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे होंगे, इस वेब डेवलपमेंट सीरीज़ को। तो हमने अपनी सीरीज़ में पिछले कुछ वीडियोस में हमने सीएसएस की पोजीशन प्रॉपर्टीज़, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़, स्यूडो क्लासेस, एचटीएमएल में सिमेंटिक एलिमेंट्स, एचटीएमएल का काफ़ी सारा पार्ट हमने कर लिया था। अब हम लोग इस वाली वीडियो में बेसिकली जब हमने सीएसएस की पोजीशन प्रॉपर्टीज़, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें जान चुके हैं, तो आज हम लोग एक लेआउट बनाना सीखेंगे, कैसे एक वेबसाइट का बेसिक सा लेआउट बनाया जाता है। ओके, सो हम लोग स्टार्टिंग करेंगे होली ग्रेल लेआउट से। बहुत ही फेमस लेआउट है, बहुत ही बेसिक लेआउट है, ऑलमोस्ट सारे वेबसाइट्स में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो दिस इज मोस्ट बेसिक लेआउट ऑफ एनी वेब पेज। तो चलिए हम लोग आज बनाना सीखते हैं कैसे होली ग्रेल लेआउट बनाएंगे, और इसके बाद हम लोग ये वाला जो लेआउट है इसको भी बनाएंगे। ये थोड़ा एडवांस है, होली ग्रेल बहुत ही सिंपल सा लेआउट है। सो होली ग्रेल बनाने के बाद फिर जाके हम लोग इस वाले लेआउट को भी बनाना सीखेंगे कि इसको कैसे बना सकते हैं, राइट। सो लेट्स डाइव इनटू द VS कोड एंड लेट्स बिल्ड इट। ओके, सो ये है हमारा सिंपल सा बॉयलर प्लेट कोड। हमने टाइटल दे दिया होली ग्रेल लेआउट, अपनी स्टाइल शीट को भी लिंक कर ली है। तो हम लोग देखते हैं कैसे बनाएंगे और अपना ये लेआउट। तो ये जो लेआउट है बेसिकली इसमें हम देखें कितने सेक्शन हैं हमारे पास। तो एक ही हेडर का सेक्शन हो गया, एक ही नैब दिख रहा होगा आप लोग को, ये मेन कंटेंट, साइड बार एंड देन फुटर। ठीक है, तो ये टोटल मिला के 5 चीज़ें हमारे पास है। तो पहले हम इन पाँचों एलिमेंट्स को अपने HTML डॉक्यूमेंट में लिख लेते हैं। तो उसके लिए हम आते हैं यहाँ पे और बनाते हैं एक हेडर एलिमेंट। आई होप आपने सिमेंटिक एलिमेंट्स वाली वीडियो देख ली होगी। अगर आपने सिमेंटिक एलिमेंट्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आपको ऊपर ये आई बटन भी दिख गया होगा। आप इस आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग बेसिकली डिव्स का यूज़ नहीं करेंगे, हम सिमेंटिक एलिमेंट्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये बना दिया मैंने हेडर। मैं इसमें लिख देता हूँ कि ये हेडर है। और फिर उसके बाद क्या था, उसके बाद एक नैव था, तो नैव बना लिया मैंने। और नैव दो था, एक साइड, अगर आप देखोगे वो लेआउट, तो एक साइड में नैव है, मतलब एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, और बीच में मेन कंटेंट है। तो हम लोग बनाएंगे इस तरह। तो हम लोग 2 नैव बनाएंगे और क्लास दे देंगे कि पहले वाला नैव जो है दिस इज़ हाँ 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 दिस इज़ लेफ्ट। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट नैव, एंड फिर एक राइट नैव बनाएंगे और यहाँ पे लिख देते हैं राइट नैव, जस्ट अ सेक ऑफ इट। पे लिख देने राइट नैव लिख दिया। और इसके बीच में एक मेन कंटेंट है, तो हम लोग मेन भी बना लेंगे, इसमें लिख देंगे मेन कंटेंट। ठीक है, और क्या बच गया, फुटर बच गया। तो फुटर का भी सिमेंटिक एलिमेंट है, बना लिया, और इसको हम लिख देते हैं फुटर। तो हमारे एलिमेंट्स रेडी हैं नो, हेडर, लेफ्ट नैव, मेन कंटेंट, राइट नैव, फुटर। बस इन लोग को अरेंज करना बाकी। ठीक है, तो अब हम अपनी स्टाइल शीट में चलते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे पहले बॉडी की स्टाइलिंग कर लेते हैं। यू नो हाइट दे देते हैं 100 वी पोर्ट हाइट। तो जितना वी पोर्ट का हाइट अवेलेबल है पूरा का पूरा ले लेगा। विद भी दे देते हैं 100 वी पोर्ट विद। ठीक है, ये हो गया। और काम करते हैं, हमारा जो ये पूरा का पूरा चीज़ है ना, इसको एक कंटेनर में रैप कर लेते हैं। कंटेनर में रैप करने से क्या फ़ायदा होता है ना, बहुत ही आपको सहूलियत मिल जाती है चीज़ों को एडिट करने की। सो और आप यू नो इफ़ यू हैव कंटेनर इन योर लाइक वेब पेज, तो आप उसको रिस्पॉन्सिव बनाने में बहुत ईजी रहता है, इट रियली हेल्प्स। सो just move them out in the container. Okay, now they are wrapped with container. So what we'll do, we'll say the container, it should take the height 100% of its parent, width as well 100%. Okay, so we have container width and height 100%, and we'll apply the display grid property here. I hope you have watched the previous video about the display properties in CSS. If you haven't watched, I'll give the I button here, and you can click this I button and you can watch that video, and then you can continue with this, because if you haven't watched that video, you won't be able to understand anything in this video. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्प्ले ग्रिड दे दिया हमने, और हम डिफाइन करेंगे कि हमारे ग्रिड में कितने कॉलम्स होंगे और कितने रोज होंगे। तो हम लोग बोलेंगे कि ओके, सो लेट्स से ग्रिड टेम्पलेट रोज। ओके, ग्रिड टेम्पलेट रोज। सो हम लोग रोज बता देंगे। एक्चुअली अगर हम लोग इस को देखें ना, तो रोज कितने, देखो टोटल 3 रोज है, राइट। तो फर्स्ट रो और लास्ट रो सेम हाइट के हैं, एंड बीच वाला रो का जो हाइट है इट्स ये बाकी दोनों रो से ज़्यादा है। और एक और चीज़ है कि जो दोनों रोज है थोड़े छोटे हैं। फर्स्ट रो हेडर वाला रो एंड फुटर का रो, दे आर लेस इन हाइट कंपेयर टू द मिडिल रो विच हैव द मेन कंटेंट एंड नैव साइड बार्स। ओके, so we'll define them accordingly. So we'll say okay, so first row has give them a height of 10%, middle row give them full fraction, which is what is available, the last row 10%, right. If you're not getting this thing
please watch my previous video. Okay, and I'll give grid template columns. So columns, if you see how many columns do we have here, we have total 3 columns, right? First column and second columns have a less width than the middle column, so we'll define accordingly. We'll say 20%. I think that's good. 20%, give the 20% width of the first column and full fraction with what is available into the second column, and third column also 20%. You can obviously manipulate these values as your demand, as the web page you're trying to build. Okay, we'll see in the next demo where we'll build some more complex layout. They will see how to uh, do this. Okay, we have defined our rows and columns in the container, but we can't see the layout still, because footer is there in the aside right nav and all. So we have to define that which which element is gonna stay where. So we have to define by element. But before that, let's just give margin 0 to the body. Okay, so let's just say header. So our header, so we have to define their positions that in the grid where they are. So I want header to be at the top, so I'll say grid row 1 in the first row. And if you see in the first row, it acquires all the 3 columns, right, from starting to ending. So I'll say, okay, so grid column, I'll say grid column start from the first column, but we have to span to the third column as well. So see, now left nav has come down. If I give a background color, then you can understand properly. Let's give a background color of aqua maybe. Yeah, see, now header has this whole width. So if I just comment it out, this grid column thing, see, it will take only this kind of this space. Right? If I say grid column 1 and span up to 3, so by default, if you don't define any grid row or grid column value, it would be by default it will be 1. So now I'm defined it, okay, 1, but span 3. Right away, it's spanning all the 3 columns. Okay, understood. So now header. Okay, now just do the nav. So nav will do one thing. We'll say only background colors. Okay, so just change the background color a little bit. Now you can see nav is already in place, but actually by default, if you wherever you will place the elements in the DOM, like in the HTML file, so after header there should be nav, and then main, and then nav, and then footer. That is why they are arranged in the same order. But if something happens now, you're gonna distort. So you just can't leave them like this, that okay, it's already in the position, why should I style them? You should always style them explicitly, that if something breaks, they have their now it is the default styling. But if you style them explicitly, so you are making sure that if something breaks in middle, so they don't get what we say distorted in the web page, because they will have their own styling enforced to them, right? So the default styling, if default styling get disappeared by some reason, so in that case they'll have their own styling to act the same they were acting before. Okay, so nav. Okay, so for nav we have to, so left and right, so we'll say the left one, grid column, we'll say first grid row. So we'll say it should start from second row, and grid column will be 1 only. Okay, because we have 3 columns, and first column will have left nav, second column will have main content, and the third column will have right nav. That is why it is see, I told you that grid row and grid column have by default value 1 and 1, right? That is why they are in the same place, because if you give grid column 1 or not, it's no difference, but you should give it as an explicit style. Same goes for the right one. So let me just define this also. So right, I'll say, see, I write I said okay, grid row 2, but grid column 1. So right from right one, it went to this one. See, footer came here, so I have to define here column. By default the column is 1. I'll say okay, it has to be in the third column, so it is now in place. So let's do the main. Okay, so main will say grid row second, and grid column will be also second, right? And we'll say a little background color maybe. Okay, let's keep deep blue maybe. Perfect.
Okay, we're not talking about much about the styling, but the layout. Okay, and rest of the footer. So footer, we'll say we just copy this main thing and just paste it here. I will change the values. So grid row 3 and grid column 1, but you have to span on all the 3 columns. Okay, so span 3. Perfect. Let's change the background color, maybe some purplish color. Perfect. So guys, you can see we have made this layout, which is called Holy Grail layout. So it was a very simple and basic thing. Now about the styling inside the components, you can style them any way you want. So here goes our Holy Grail layout. So next we're gonna check about we're gonna do more advanced this layout we're gonna make. Okay, so yeah, that's it for the video. If you like the video, please hit that like button. If you are new to the channel, subscribe the channel, and yeah, share the video with your friends and colleagues, whoever wants to know these things, development things. And okay, so let's meet in the new video. Till then, keep coding and keep learning.